Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Thursday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। और सबसे पहले अब हेडलाइंस, जिनके साथ है अर्जुन चौधरी। Prime Minister Narendra Modi says balanced development of states necessary for India's faster growth. Mineral production rises by 6.8% in March and key domestic indices decline for the third straight session. Sensex closes at 60,432. Nifty settles at 18,130. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की तेज वृद्धि के लिए राज्यों का संतुलित विकास जरूरी है। खनन उत्पादन मार्च में 6.8% की दर से बढ़ा और प्रमुख घरेलू बाजार लगातार तीसरे सत्र गिरावट में रहे। सेंसेक्स 60,432 पर और निफ्टी 18,130 पर हुए बंद। इससे पहले कि हम पहली खबर लें, हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, नमस्कार, आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में। जी शुक्रिया, थैंक यू। और अब लेते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रतिकूल वैश्विक स्थिति के बावजूद भारत की विकास दर स्थिर बनी हुई है। वे ओडिशा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में और तेज वृद्धि के लिए राज्यों का संतुलित विकास जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है और नई सुविधाओं को देश के दूर दराज के इलाकों में ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि मूलभूत ढांचा न सिर्फ लोगों के जीवन को सरल बनाता है, बल्कि पूरे समाज का सशक्तिकरण भी करता है। डॉक्टर शर्मा, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का, जिस पर इतना बल दिया जा रहा है, तेजी से जिसमें विकास हो रहा है, वो पूरे देश के सतत विकास के लिए कितना जरूरी है? और इससे जो उन्होंने राज्यों की बात कही है, राज्यों का संतुलित विकास कितना संभव हो पाएगा? जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक तो जो ऐसी स्थिति जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो ऐसी प्रतिकूल जो स्थितियां हैं जिनकी वजह से पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी डगमगाई हुई है। ग्रोथ बहुत ही फ्रजाइल है। ग्रोथ को जो एंटिसिपेट किया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशंस ने, वो डिसलिरेटेड ट्रैजेक्टरी में है। तो फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और हम जो 7% के आसपास का अभी इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम ग्रोथ रेट हासिल कर रहे हैं और इस वर्ष के लिए भी अनुमान बहुत अच्छे हैं। और इसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारी स्टेट्स हैं उनका भी संतुलित विकास हो। जैसे कि कई बार स्टेट्स का जो ग्रोथ रेट्स है वो बहुत वॉलेटाइल रहते हैं। कई बार वो स्टेट्स जो है कभी अच्छे रेट पे बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, कई बार ग्रोथ डिसलिरेट होती है। तो स्टेट्स को चाहिए कि कैसा वातावरण क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो और संतुलित हो। जो कि जैसे भारत की ग्रोथ है, हम जैसे ओवरऑल इंडिया की हम ग्रोथ देखते हैं कि कभी भी जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, कभी भी जो भी क्राइसिस आते हैं, तो उसके बावजूद भी, चाहे वो लेमन क्राइसिस था, हमने फिर भी 7% के आसपास की ग्रोथ हासिल की। चाहे वो कोविड क्राइसिस था, तो उसके अगले ही वर्ष में हमने 9% के आसपास की ग्रोथ हासिल की। तो इस तरीके से जो ग्रोथ मोमेंटम है, जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, वो एकदम से इंटैक्ट रहना चाहिए और स्टेट्स को अपने पूर्ण विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हुए ग्रोथ को संतुलित करना चाहिए। Dr. Sharma, there appears to be 7 new projects that have been sanctioned and approved by the Railway Minister in collaboration with the state government of Odisha as well. Are we talking about passenger traffic or are we talking about freight development? Yes. I am talking about the overall infrastructure development, whether in the railways or in the
airport, port, or all kind of infrastructure, because infrastructure is backbone of the Indian economy. Without infrastructure, we can't grow in a sustainable growth trajectory, and we need infrastructure because infrastructure multiplier is very high. If we invest in infrastructure, then that provides a lot of employment opportunities with the capex expansion, and skilled, unskilled, and semi-skilled workforce is absorbed in the infrastructure development of the country, and the growth also becomes high on the high road. So that is the support of the infrastructure. That's why the government has focused infrastructure very rightly during the last many years, and there is a infrastructure investment pipeline which is called the NIP, which is of more than 1 lakh crore in the next 5 years. That had started 3 years ago. So now with this development, now capex is also expanding, and the support to the economy is also becoming more and more strong, and growth is becoming sustainable. So infrastructure is always backbone of any developing economy like India, and our target is to become a developed economy by 2047. So that's why we have to strengthen our infrastructure trajectory at a more visible road, so that we are able to attract more and more investments from the foreign countries for the development of infrastructure and development of the overall socio-economic infrastructure of the country. So, डॉक्टर शर्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो जोर दिया जा रहा है सरकार द्वारा निरंतर हर बजट में हम देख रहे हैं, उसके अलावा अगर आप 2 और कौन से फैक्टर्स साइट करना चाहेंगे जिनके कारण हम देख रहे हैं कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो लगातार स्टेबल बनी हुई है. इनफैक्ट IMF ने भी पॉइंट आउट किया है कि पूरे ये जो ग्लोबल टर्मोइल है उसमें भारत एक ऐसा है स्वीट स्पॉट, जो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है. उसके पीछे और कौन से फैक्टर्स आप मानते हैं प्रोमिनेंट? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमारी जो डिमांड है, जो जिसकी हम बात करते हैं कि हमारी कंजम्पशन डिमांड एक बहुत बड़ी स्पोर्ट है, जो कई बार जो ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से हम आगे जो हमारी ग्लोबल इंटीग्रेटेडनेस है उसमें जो शॉक्स हैं उनका इम्पैक्ट आता है, एक कंटेजियस इम्पैक्ट आता है. लेकिन फिर भी जो हमारी इंटरनल ग्रोथ है, जो हमारे कंजम्पशन ग्रोथ है, वो हमें हमारी ग्रोथ को सपोर्ट देती है. मतलब हमारा टोटल जो GDP है वो उसकी वजह से सपोर्टिव ट्रैजेक्टरी में रहता है. जैसे अभी हमने कोरोना के बाद में ही हमने एकदम से रिकवर किया. पहले तिमाही में हमारा जो ग्रोथ था वो 24% गिरा और अगले में ही पॉजिटिव में आ गए, चाहे वो पॉइंट्स में था, लेकिन ओवरऑल हम पॉजिटिव ही रहे. उसके बाद मतलब 3 जो क्वार्टर्स थे उस साल के जो पैंडेमिक ईयर का था. तो कंजम्पशन डिमांड एक मेजर सपोर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, जो कंजम्पशन की वजह से जो हमारी बहुत बड़ी डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है. और तीसरा जो बड़ा फैक्टर है हमारी बैंकिंग प्रणाली, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है, और हमें कोई भी क्राइसिस हो उसका उतना ज्यादा डीप इम्पैक्ट नहीं होता जितना कई बार दूसरी इकोनॉमीज, मेजरली एडवांस्ड इकोनॉमीज भी झेलती हैं. तो हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है बहुत स्ट्रांग है, जो ग्रोथ को बहुत जबरदस्त सपोर्ट देती है. अगर बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो और कंजम्पशन डिमांड इकोनॉमी में हो, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुर्लभ एक ऐसी स्थिति है जहां पे जो भारत के पास है, जिसमें हम बहुत बड़े क्राइसिस में ही बहुत उसमें से बड़ी जल्दी ही रिकविनेट हो जाते हैं और बहुत जल्दी अच्छे से ग्रो करते हैं. Dr. Sharma, very briefly, is this part of the double engine growth of the central and the state government in Odisha? There's also demand for a seaside airport in Puri, which is also a tourist destination. Is this the double engine growth policy? Yes, Arjun, that is very, very important, because without the support of the states, the economy can't sustain in a high growth trajectory. So the states, because this is a combination, growth is combination of growth of all the growth of the states. So in totality, India represents a great insights about the growth trajectory of our states, and like the states, if we go by the numbers, the states are growing like after the pandemic year. Like in 1920, the growth of some of the states, I would like to mention that
Gujarat grew at the rate of 8.4% in 2019-20 before the Corona period, and Telangana 10.8%, Tamil Nadu 6.9%. But during the pandemic year, these states were growing at around 1.2%, 1.2%, 3.7% respectively. But after the Corona, the Corona period, the pandemic period, these states are growing in a very much higher trajectory. Like Gujarat grew at the rate of 19.6% in 2021 at the current prices, and at 15% in 22-23. And Telangana again at around 20% in 21-22 and 15% in 22-23. So states have recovered so sharply from the pandemic of 2021. Growth of states always supports the overall growth of the Indian economy. So states sustainable growth is very much important for the overall growth of the country. That's why we are calling it the double engine, because if the states grow, then they also support the Indian economy, and Indian economy itself also grows. So that becomes more strong and strong in the global ecosystem. Moving on to our next story, the World Economic Situation and Prospects report released by the United Nations has reposed its faith in the Indian economy. The report said that India is expected to grow by 5.8% in 2023 and 6.7% in 2024. With this, India is expected to remain the fastest growing major economy in the world. The growth will be supported by resilient domestic demand. The UN report said that India remains a bright spot amid global economic uncertainty. It said that inflation in India is expected to decelerate to 5.5% in 2023 with a moderation of global commodity prices and slower currency depreciation. The report said that economic growth in India is expected to remain strong, while the prospects for other South Asian nations are more challenging. Since India's inflation is about 5.5%, India will have a significant room for both fiscal expansion and monetary accommodation to support the domestic demand. The report said the world economy is projected to grow by 2.3% in 2023 and 2.5% in 2024. Very briefly, it appears that our growth prospects for this financial year and for the next is significantly higher than the world's growth, which is at 2.3% for 2023. How has India achieved this? Very briefly. Yes, Arjun, India is consistently resilient in the global economy, I would say, because we are consistently growing in the higher trajectory. We grew at around 9% after the Corona period, 21-22, then again at around 7% last year, and current year's projections are also very high, somewhere between 6 to 6.8%, and the mean is at around 6.5%. So we are consistently moving ahead with a strong growth trajectory. What is the principal reason, Dr. Sharma? The reason is consumption demand, firstly, I would say, and second is the infrastructure development, and third is the policy environment, supportive policy environment which the government has provided during the last 3-4 years from the grassroots level, and so many reforms undertaken by the government, starting from the agriculture sector to the financial markets, NBFCs, MSMEs, tourism sector. Every support is there, and a great hand-holding has provided a great support to the growth trajectory. That's why we are visible and we are lucrative in the global charts. And now IMF is seeing that we are a bright spot in the global ecosystem. And our analysis that we are consistently resilient in the global ecosystem, and with the support of the policy environment, consumption demand and infrastructure development in the country. जी, इसी से जुड़ी हुई है हमारी अगली खबर। Amazon वेब सर्विसेज ने 2030 तक भारत में क्लाउड अवसंरचना में $12.7 बिलियन निवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की है। एक वक्तव्य में Amazon वेब सर्विसेज ने कहा कि भारत में डेटा सेंटर अवसंरचना में सुनियोजित निवेश प्रत्येक वर्ष भारतीय व्यवसाय में 1,31,700 पूर्णकालिक समकक्ष अनुमानित औसत नौकरियों को समर्थन देगा। क्लाउड मंच स्टोरेज, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित 200 से अधिक सेवाओं का अवसर प्रदान करता है। ये प्रस्तावित निवेश ऐसे समय में आया है जब भारत बड़ी कंपनियों के निवेशों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। Amazon वेब सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडम सेलिप्स्की ने कहा कि भारत के बाजार में अद्भुत ऊर्जा और उच्च विकास की संभावना है। सो वही बात दोहराई जा रही है। Amazon जैसी कंपनियां यहां पर इतना निवेश कर रही हैं। कैसा लगता है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो एक हाई टेक फील्ड है, उसमें भी आपको लगता है कि भारत अपना वर्चस्व बना रहा है?
जी बिल्कुल सोनू जी, जो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो प्रणाली है उसका अभी जो प्रचलन हुआ है, जिस तरीके से भारत उसको अडॉप्ट कर रहा है, तो भारत एक नई अर्थव्यवस्था है जो ऐसे ऐसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। तो इसमें सभी जो रुझान है, जो विदेश की कंपनीज हैं जो बहुत ग्रोइंग एंड लुक्रेटिव कंपनीज हैं, वो भारत की तरफ बहुत ही आकर्षित है। उसके पीछे कारण है, एक तो हमारे पास ग्रोथ है, दूसरा हमारे पास कंजम्पशन डिमांड है, जैसे मैंने पहले बताया। तो हमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, शायद ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से भी हम बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो कंपनीज जो लार्ज कंग्लोमरेट्स हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं भारत की तरफ, कि हम डिस्पाइट दी headwinds and despite the adversities, we are growing in a good growth trajectory with the support of the adoption of the policy environment. और इसका श्रेय आप, जैसा आपने कहा, पॉलिसी एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जैसी जो पॉलिसीज हैं उनको भी देंगे? जी बिल्कुल, जैसे सरकार ने पीएलआई अनाउंस किया जो 14 सेक्टर्स में, तो उसके बाद अभी सरकार और भी विचार कर रही है कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी हम पीएलआई लेके आ सकते हैं, और वो विजिबल है उसका इफेक्ट। जैसे कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में अगर आप देखें कि हमने सीधा ही रिकवरी, जो $300 बिलियन के नीचे हमारा एक्सपोर्ट था मर्चेंडाइज सेगमेंट में पैंडेमिक पीरियड में, वो बढ़ के उसके 1 साल के बाद ही हमने $423 बिलियन किया। उसके बाद हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो $447 बिलियन कर चुके हैं। और हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ा है डिस्पाइट स्लो डाउन इन द ग्लोबल डिमांड, डिस्पाइट हाई इन्फ्लेशन इन सो मेनी इकोनॉमीज, डिस्पाइट द जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, वी आर ग्रोइंग इन आवर एक्सपोर्ट trajectory at a higher rate. That is a great thing which has happened with the support of the policies like the PLI scheme. In more news, the index of mineral production of mining and quarrying sector for the month of March has increased by 6.8% as compared to the level in the month of March last year. As per the provisional data of Indian Bureau of Mines, the cumulative growth for the period April to March 2022-23 over the corresponding period of the previous year is 5.8%. Production level of some of the important minerals in March this year was coal, 1,078 lakh tons, lignite 46 lakh tons, and copper concentrate 12,000 tons. What does this tell us about the mining sector and its productivity? We also have other statistical data from the IIP. How are these two different, and what does this help us understand about the mining and quarrying sector? Yes, Arjun, because IIP provides some direction of the industrial growth, how IIP moves, and what will be the scenario of the overall production possibilities in the country. As in the last financial year, IIP growth was average 5% during the last financial year, and in the month of March, IIP grew at around 1%. So IIP provides a direction of the production possibilities in the industrial segment, and mining. This provides the support of the raw materials which are provided, and basic raw materials which are needed by the industry. So growth in the mining sector also becomes supportive to the overall growth of the industrial sector, and that provides an indication that going forward there will be higher growth in the overall industrial segment, because mining, manufacturing and electricity, these are the three components of our overall industry growth. डॉक्टर शर्मा, ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस का जो एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है, आपको लगता है उससे भी ये जो मिनरल प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिला है और हम इस फील्ड में भी आत्मनिर्भरता की उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल सोनू जी, जितना हम ज्यादा अपने मिनरल रिसोर्सेज को, जितने ये रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, तो और ज्यादा हमें अपनी आत्मनिर्भरता के ऊपर हमें और दृढ़ निश्चित होंगे, और हमें इनको ज्यादा से ज्यादा जो है एक उस तरीके से कि जो एनवायरनमेंट भी हम मेंटेन कर पाएं और अपना जो सपोर्ट है इकोनॉमी को, इंडस्ट्री को, वो भी हमारी मौजूद रहे। तो उस तरीके से हम जो एक्सप्लोरेशन है वो हम कर सकते हैं, और हमारे पास बहुत व्यापक ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आगे और एक्सप्लोर करने की जरूरत है, सो दैट आवर डिपेंडेंस जो ऑन द अदर मार्केट्स बिकम्स
low and reduced from the other countries, क्योंकि हम जितना ज्यादा डिपेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज के लिए दूसरे कंट्रीज के ऊपर रहेंगे तो उतना ज्यादा हमारे ऊपर जो ट्रेड डेफिसिट है हम इंपोर्ट करेंगे तो उसका और ज्यादा असर होगा, तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है। तो हम एक बैलेंस बना के जितना हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके ऊपर ज्यादा करना चाहिए। Do we expect the IIP data for April to improve? The IIP for March is 1.1%, but now we have the index of mineral production of mining and quarrying at 6.8%. For April, do you see improvement? Yes, I would say that April month is the start of the financial year, and GST collections at all-time high in the month of April are indicating that other macroeconomic indicators will also grow in the comfortable and strong trajectory. And GST collections for the month of April were 1,87,000 crores. So this was the highest figure since the start of the GST. So production possibilities are expanding, and we are expecting a higher growth in the IIP numbers for the month of April. आइए अब चलते हैं शेयर बाजारों की ओर। लगातार तीसरे सत्र घरेलू शेयर बाजार गिरावट में रहे। रियल्टी सेवाओं और बिजली के क्षेत्रों में गिरावट सबसे अधिक रही। सेंसेक्स 61,500 के और निफ्टी 18,150 के नीचे आ गए। वैश्विक शेयर बाजारों में रुख सकारात्मक रहने के बावजूद दोनों सूचकांक गिरावट में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 130 अंक कम होकर 61,432 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 52 अंक टूटकर 18,130 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी आज गिरावट का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.67% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.26% की मंदी दर्ज हुई। Benchmark domestic indices ended lower for the third straight session in a row, led by losses in stocks of sectors such as realty, services and power. BSE Sensex closed below 61,500 points, while NSE Nifty settled below 18,150 level. Both stock indices declined even as global share markets were positive. Sensex fell by 130 points to finish at 61,432. Nifty slipped by 52 points to end at 18,130. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 0.67% and the small-cap index fell 0.26%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 19 fell while those of 11 rose. SBI was the biggest loser, declining 2.1%. ITC fell 1.9% and Titan slipped 1.5%. On the other hand, Bajaj Finance was the top gainer as it surged 1.2%, followed by Kotak Bank, which climbed 1%. Bharti Airtel gained 0.9%. In the sectoral indices at the BSE, only 2 sectors posted gains while 18 suffered losses. Financial services rose 0.1% and auto added marginally by 0.1%. On the other side, realty lost 2.3%, power, utilities and oil and gas fell 1.4% each. The overall market breadth was negative as shares of 1,922 companies declined, while those of 1,559 companies advanced. A total of 125 shares remain unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 59 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 103.11 पर था। डॉक्टर शर्मा, लगातार तीसरे सत्र गिरावट हुई है बाजार में। कैसे देखते हैं आप भारतीय बाजार की स्थिति को ऐसे समय पर, आज जब जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनमें थोड़ी तेजी दिखाई दे रही है? जी सोनू जी, बिकॉज हमारे बाजार में कुछ हमारी तरफ से जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसकी वजह से कोई ऐसा वरिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं जैसे कि यूएस में डेट सीलिंग के ऊपर एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जो आने वाले टाइम में जो क्लियर होगी तो उसके बाद ही जो मार्केट्स हैं कोई अच्छा रुख ले पाएंगी, लेकिन वॉलेटिलिटी बनी रहेगी अभी जब तक कुछ इसके ऊपर यूएस की तरफ से एक क्लियर ऐसा विचार नहीं आता कि उनका जो डेट सेलिंग है उसको किस तरीके से आगे सेटल कर रहे हैं। तो थोड़ी मार्केट्स में ऐसा रुख बना रहेगा अभी थोड़े दिन के लिए। We saw the FIIs once again being net buyers to the tune of 970 crore rupees. Will they continue despite what's happening in the US in terms of the buying for the remainder of the week? Yes, I'm very much optimistic that FIIs will remain very, very lucrative towards the Indian economy and the Indian markets, because we have growth and we are growing in a good number and a good growth trajectory with the support of so many reforms undertaken by the government.
आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था। जापान का निक्केई सूचकांक 1.6% के उछाल में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग दोनों 0.8% की बढ़त में रहे। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.4% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% की तेजी में रहे। यूरोपीय बाजारों में भी आज तेजी का रुख था। ताजा समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी में 0.6% की वृद्धि थी। फ्रांस का कैक 0.9% की बढ़त पर था और जर्मनी के डैक्स में 1.6% की वृद्धि थी। U.S. stocks rose sharply yesterday, fueled by optimism over a potential deal on the $31.4 trillion federal debt ceiling. The rise was also attributed to rebound in regional bank shares, easing concerns about an escalation in the sector's troubles. Nasdaq Composite Index gained 1.3%, both Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 rose 1.2% each. Dr. Sharma, how resolved is the U.S. economy regarding its banking system, which have suffered from bankruptcies and devaluation in the stock market? Do you see the U.S. debt ceiling actually dissolving confidence in their bond market, the government securities? What is going to be the next step as far as global investment is concerned there? Yes, Arjun, I would say that they have to take some strong decision because this trillions of dollars of debt ceiling, like the US dollar $31.4 trillion debt ceiling is now becoming a major worrying factor for the global economy. And like the bond market, so recovered, but still the growth is fragile in each and every segment of the US economy, and they have to come out with a strong policy decision as soon as possible. Because आउटसाइड चांस अगर डेट डिफॉल्ट हो जाता है डॉक्टर शर्मा यूएस का, तो क्या उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे आएगा, इंक्लूडिंग इंडिया, सेंटिमेंट पे? जी बिल्कुल, क्योंकि यूएस एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ज्यादातर यूएस की बहुत अच्छी उसमें एक डायरेक्शन रहती है, क्योंकि डॉलर ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, तो एक मेजर इम्पैक्ट रहता है। अगर यूएस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग रहती है तो उसका स्ट्रांग इम्पैक्ट होता है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर। और अगर उसमें कोई ऐसी जैसे कोई वरिंग फैक्टर, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये डेट सीलिंग का जो लेके चला है, तो उसका कुछ असर तो सभी मार्केट्स के ऊपर रहेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी जी जी। And prepare for the worst. Moving on to the oil market, oil prices eased today as traders warily watch for signs of progress on talks to raise the U.S. debt ceiling. Prices had surged in the previous session on optimism over U.S. fuel demand. In intraday trade, Brent crude was trading at $72.66 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $76.77 per barrel when reports last came in. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाले सोने का मूल्य 135 रुपए कम होकर 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 490 रुपए की गिरावट से 72,150 रुपए प्रति किलो पर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,997.40 प्रति आउंस पर था। चांदी भी मंदी दर्ज करती हुई $23.75 प्रति आउंस पर थी। क्या कहेंगे आप, सोने में निवेश क्या इन थोड़े से जो अनसर्टन ग्लोबल सर्कमस्टांसेस हैं एक अच्छा विकल्प है? जी, सोने में सोना एक इस टाइम पे बहुत ही एक ऐसी मैं बताऊंगा कि ऐसी कमोडिटी है जो बहुत ही सेफ है और जिसमें लोग काफी आकर्षित हैं, considering the global headwinds and uncertainty in the global economic environment. समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। डॉक्टर शर्मा, आप शामिल हुए कार्यक्रम में और अपने हमारे श्रोताओं को विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says balanced development of states necessary for India's faster growth. Mineral production rises by 6.8% in March and key domestic stock indices decline for the third straight session. Sensex closes at 60,432 and Nifty settles at 18,130. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.